Okay, hello, good afternoon. We are live. Welcome back to another session of the Hindu Analysis and to the Law Entrance YouTube channel. Today is 6th of February and we are ready to begin. So, Delhi elections are done. Yesterday, on 5th of February, we had elections in Delhi, and now results would be announced on 8th of February. But yeah, that's not important from a competitive point of view. I just said that because that's the headline of today's newspaper. There's approximately 60% voter turnout, which was recorded yesterday in the elections. And we'll see who forms the government in the capital city. Now, how many of you are here with me live and you can hear me, you can see me? Please let me know in the chat box so that we can jaldi se begin. Kushagra is here. Very good afternoon. Who else has joined? Please let me know in the chat box. उसके बाद जल्दी से हम start करते हैं. Meanwhile, I hope you all have set your goals for the month of February and for this week and the next week as well. And you are achieving them constantly, continuously, tracking your progress, improving every day. Piyush is here. Good afternoon. All right, chalo, ठीक है. Let's start. Let's begin today's session. जल्दी से हम चलते हैं अपनी presentation पे. Let's look at the agenda for the day and then let's move on to the newspaper analysis. Okay, so आज है 6 फरवरी, 6th of February, and today is a lovely Thursday afternoon. Let's look at the agenda for the day. The first topic which we are going to discuss is health leadership. Now, this is in context with the recent allocations and schemes and initiatives which have been announced in the budget 2025. So, speak editorial article hai. So, we'll talk about what the article is saying. This article is a little bit in contrast to what we were discussing yesterday, that our healthcare infrastructure is not that adequate. We were talking about the cancer financial toxicity and how we are spending less than 2% of our GDP on healthcare. But on the flip side, this article tells you that what exactly are we planning to do in the year, in this particular year? What have been different allocations? What have been different initiatives and so on? So that is that. On the second article, we have the discussion on monetary policy. Now, monetary policy, as we all know, is decided by the Monetary Policy Committee, MPC, and the Reserve Bank of India. And why are we discussing monetary policy in this particular article? That's because of the constant decline of the value of rupee against the dollar. So recently we saw that $1 reached 87 rupees, and that was a record low. 87.3 was the record. 87.12 पे फिर close हो गया था. But we were discussing the causes of why the value of rupee is declining against the dollar, and we pinpointed it to the strengthening of the dollar or the increase in demand of the dollar as the primary reason, right? But there are multiple secondary reasons as well, and one of them is the tight monetary policy which is being implemented by the MPC or the Monetary Policy Committee. So we'll look at what exactly do we mean by that, what exactly is the Monetary Policy Committee, who are the members, and how things work around. Then there is an article on the rise of UPI. I hope most of you are aware what is UPI, and some of you might also be using UPI. Can anyone tell me the full form of UPI in the chat box? And also tell me in which year did UPI launch? When did UPI come into picture? Please tell me these two answers in the chat box. If you know them, that would be great. So we'll discuss how UPI payments have increased over the years and how it has become now a day-to-day thing for all of us. But it's a revolutionary technology in terms of how we have pioneered peer-to-peer payments, peer-to-merchant payments. So peer-to-peer is between two people, peer-to-merchant is between a person and a merchant, and how different countries have also adopted the UPI. Multiple countries have taken the technology from us. So that is what the article is about. Then there is an article on javelin. Now, this is not the sport javelin. This is the anti-tank guided missile wala javelin, which is developed by the US. So the context for this particular news is that the Indian Prime Minister Modi ji is going to visit Washington to meet Trump next week. And before that, we are having multiple defense deals which are in progress. And out of that, the javelin
ATGM और द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज वन ऑफ देम. इसके अलावा एक और मिलिट्री इक्विपमेंट है विच इज कॉल्ड द स्ट्राइकर. The Striker is an ICV, which is your infantry combat vehicle. So it's sort of a eight-tire truck, कह सकते हो, which resembles a tank and used by the infantry, right? तो ये दोनों जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इनका साथ में कोऑपरेशन, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का नहीं, दोनों कंट्रीज का, इंडिया एंड यूएसए का, and collaborating on developing these two and us taking this technology from them is what the article talks about. Then at last we have an article which talks about Fort William. Does anyone know in which city is Fort William located? Can you guys tell me in the chat box? Fort William का नाम बदल के we are planning to keep it Vijayadurg. Vijayadurg was one of the first naval ports established by Chhatrapati Shivaji Maharaj, and to decolonize our country and the names which were given to us by the Britishers, this is a move which has been taken, that we are going to change the name of Fort William, which currently serves as the headquarter of the Eastern Command of Indian Army. इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए शायद कि फोर्ट विलियम कहाँ पे लोकेटेड होगा. So इसको हम नाम बदल के we are keeping it Vijay Durg. Okay, so these are the things which we are going to discuss today, and then of course 3 new words of vocabulary. So quite interesting articles today. Let's begin our session and let's move to the newspaper analysis very quickly. Priyanshi is here, Ashnur is here. Good afternoon, guys. Yes, Kolkata is the right answer for Fort William. Absolutely correct. Unified Payment Interface is the full form for UPI. And 2016 was the launch year. To be specific, 1st April 2016, if I'm not wrong. And yeah, correct answers to all the questions. Well done. Chalo, let's move to looking at what exactly do we have in today's newspaper. So let me just quickly present the newspaper for you all. All right. I hope you all can see the newspaper on your screens. Okay. Turnout almost touches 62.59% recorded in 2020 assembly elections, 60% polling recorded in crucial elections in Delhi, as we were discussing. On the right-hand side, you see US President vows to take over and develop Gaza Strip after resettling Palestinians. So this is more in line with the one-state solution. I hope you guys understand what is the one-state solution and the two-state solution. Most of the other countries, the other geopolitical powers, are advocating for a two-state solution, whereas Trump wants to take over Gaza Strip and resettle the Palestinians and develop a one single state, which is not really being, accepted with a lot of warmth, or it's not a welcome move essentially. So let's see how it goes on. The other countries are usually really not in favor of this particular move. 150 odd voters reach old booth only to find their names deleted from the list. Nothing new happens every election. US aircraft lands in Amritsar with 100 deported Indians. So this is an updated sort of news, because yesterday we were talking about how we had 200 something, 204 was the specific number, 204 passengers who were deported from US, who were illegal immigrants, and they landed in Amritsar, Punjab. There were Gujaratis, Punjabis, Haryanvis, and so on in those list of people. But now the updated number is 100. So that is some update in the news. Now, moving ahead, what do we have? Delhi elections. We can skip this. Okay. State-based news. 6 states resolve against UGC's new draft regulation. So we have discussed this, the new draft regulations. The decision was taken during a conclave of state higher education ministers hosted by Karnataka. A 15-point resolution taken at the meeting urges center to withdraw the regulations. तो बेसिकली इससे है ये कि स्टेट्स की थोड़ी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी ओवर द स्टेट यूनिवर्सिटीज, बिकॉज आपके जो चांसलर होंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट स्टेट से रिप्रेजेंट होते थे, अब वो कोई भी हो सकते हैं. So that is why the states are not very much in favor of the new UGC draft regulations. MPCM releases 5 more cheetahs in the wild in Kuno. So Kuno is a national park जहाँ पे recently हमने अफ्रीका से मंगा के चीताज इंट्रोड्यूस किए थे. It's in Shiopur district. You can see it. Releases a cheetah into the wild, and कुछ एक दो चीता मर भी गए थे यहाँ पे.
But now 6 to 8 more cheetahs are also said to be brought from South Africa and moved to a new home, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in Mandsaur district of the state. So this is apart from the 5 cheetahs which have been released in Kuno. ठीक है, ये इससे पहले देखो लिखा है 8 cheetahs had been brought from Namibia and Prime Minister Modi had released them in the enclosures in 2022. So पहले यहाँ पे cheetahs हुआ करते थे, but they were sort of became extinct in India. So we have reintroduced them in India. Okay, now moving ahead, what do we have? Okay, nothing important here. Moving to the editorial article, a budget that is mostly good but with one wrong move. So this we have already discussed multiple times. Budget पे बहुत discussion हो गया हमारा, so इसमें हम ज़्यादा deep नहीं जाएंगे. This is also mostly talking about different numbers, gross tax revenues, government expenditure, and fiscal health indicators. You can read this if you are interested, but I don't know, not that important from a competitive point of view. मन हो तो पढ़ लेना. On the left hand side, you have not worth the risk. India must address illegal immigration with empathy and urgency. Now, this is in context of the again US wala jo deportation tha. So, उसी context में they have said that we should approach this with empathy and urgency. एंड काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है इंडियन गवर्नमेंट को एंड इंडियन डिप्लोमेसी को, बिकॉज कोलंबिया जैसा छोटा सा पिद्दी सा देश साउथ अफ्रीका का, उन्होंने दे टुक अ स्टैंड अगेंस्ट यूएस एंड द इनह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिटीजन्स. ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो, which is okay, but them being sent handcuffed and in humiliating conditions, that is something we should have probably taken a stand against. So हाँ, उस बारे में भी है ये आर्टिकल. So interesting article, you can read it. Okay. Moving ahead, we have a tough call. The rupees slide confounds monetary policy makers' tasks. So this was what I was telling you. The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee will conclude its first policy review of 2025 on Friday in significantly different circumstances from its December meet. Why different circumstances? Because in these 2 months, the rupee has slipped by 2 more rupees. I mean, the value of rupee has slipped by 2 more rupees against the dollar. And the RBI now has a new governor with former Revenue Secretary Sanjay Malhotra replacing Shaktikanta Das soon after the review. So this is an important one-liner. The new RBI governor Sanjay Malhotra replacing Shaktikanta Das. ठीक है जी. Okay. उसके बाद they have explained the reason why the rupee is falling against the dollar and all about the monetary policy. So we'll talk about that in detail. Let's see what else do we have. Opinion piece, maybe we have a lesson from Democrats woke debacle. This is not important for us. This is primarily about US politics. So if you're interested in it, you can read it, but Indian politics से related ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें है नहीं. Okay. Moving ahead, the rise of UPI digital payments. There has been a tenfold increase in digital payments from 2018. So there has been a payment revolution. तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे. What is UPI? When was it formed? What is the infrastructure? Who is the body responsible? When was the body formed? What was the statute? All of that we'll discuss. What is the Supreme Court directive on sacred groves? Now, this is also not that important, but ठीक है, एक case है, which is the T.N. Godavaran versus Union of India, which establishes the definition of forest land and how are sacred groves traditionally conserved by communities. तो इसके हम gist पढ़ लेंगे. The Supreme Court ordered the Rajasthan Forest Department to map and classify sacred groves as forests and community reserves under the Wildlife Protection Act. This order shifts control of sacred groves from community-based management to forest department. तो पहले वहाँ की जो local communities हुआ करती थी, जो गांव वाले होते थे, जो tribesmen होते थे, वो उन sacred ये जो groves आप देख रहे हो, these are called groves. इनको manage करते थे. But अब ये forest department के अंदर चले गए as per the Wildlife Protection Act. The decision conflicts with the Forest Rights Act, which recognizes community rights over forest resources. तो Forest Right Act कहता है कि जो forest के resource हैं वो community को belong करने चाहिए, community का उस पे हक होना चाहिए. The shift in control from community protection to forest department could undermine the traditional governance of these areas, क्योंकि जो traditional practices हैं, जो traditional तरीके से वो लोग cultivation कर रहे हैं, protection कर रहे हैं, forest department को अभी वो चीज़ उतनी अच्छे से नहीं पता. So that is why they are saying कि भाई रहने दो लोकल कम्युनिटी के पास सेक्रेड ग्रोव्स का प्रोटेक्शन.
How will the forest departments take over clash with the FRA's provisions? FRA is your Forest Reserve Act, Forest Right Act. Sorry. So this is a interesting article. पढ़ सकते हो आप लोग. ठीक है. All right. Western Ghats, a living archive of culture, memory, and resilience. This is not important. Can move ahead. Narcotics network backing infiltrators in J&K, says Amit Shah. Government warns officials against using AI tools due to security risk. Okay. What else? This is an important one. Striker infantry vehicle deal with the US progresses. Javelin to be redemonstrated. So you can see the Striker armored vehicle here. So this is sort of like a tank and truck का combo. And Javelin is your missile. Shoulder पे रख के चलाने वाली जो सलमान खान ने चलाई थी. कौन सी मूवी में? कौन सी मूवी में? रेस 3 में. मैंने देखी नहीं है. मैंने बस वो विजुअल देखा था. इसमें सलमान खान ऐसे रॉकेट लॉन्चर लेके चल रहा है. एंड एनीवे सल्लू भाई तो कुछ भी कर सकते हैं. हम कौन होते हैं उनको क्वेश्चन करने वाले. बट द पॉइंट इज कि javelin is an anti-tank guided missile which is an automatic missile which uses infrared technology to track its target. एंड इससे आप बंकर भी उड़ा सकते हो, हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते हो, टैंक तो उड़ा ही सकते हो. So ठीक है. So ये this becomes important in context with the upcoming meeting between the US president and the Indian prime minister, which is going to happen in Washington DC. ओके. वेस्ट एशिया क्राइसिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन IMEC. ये बोला है हमारे ग्रीस के एक भाई साहब हैं फॉरेन अफेयर्स वाले, जॉर्ज जेरापेट्राइटिस. उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया में जो उथल पुथल चल रही है उससे जो हमारा ये IMEC है विच इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई एंड गुजरात एंड देन कनेक्ट्स विद योर Middle Eastern countries, goes through Israel, then goes through Greece, and then connects with Italy at last. So ये है कि जो क्राइसिस चल रहा है इसराइल में, वो कह रहे हैं कि इस क्राइसिस की वजह से हमारा IMEC पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ग्रीस फुली सपोर्ट्स द IMEC एज अ प्रोजेक्ट फॉर पीस. जॉर्ज भाई साहब ने बोला है कि प्रोजेक्ट्स प्लानिंग हैज बीन डिलेड सिंस इट्स लॉन्च इन September 23 ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वेस्ट एशिया एंड द इजराइल गाजा वॉर इन पर्टिकुलर. एंड उन्होंने बोला है कि और क्या बोला है, लेट्स सी. Greece is working towards doubling trade and investment initiatives with India and plans to open 2 new consulates in Mumbai and Bangalore. It also wants direct flights to begin and more visas to be issued. सही है, बढ़िया है, interesting. Good for us, good for them, good for everyone. Okay, what else do we have? Majority of exit polls predict BJP's return to power in Delhi. Let's see. What do you guys think? Who would come to power in Delhi? BJP और आम आदमी पार्टी? कांग्रेस का तो सीन अभी थोड़ा डाइसी लग रहा है. But how would you guys know? If you are a Delhi resident, then you might know. Even I am not a Delhi resident, but I've been living in Delhi for 7-8 months now. ठीक है. All right. Moving ahead, Congress, Sikkim, BJP oppose plan to rebuild the Teesta Dam. This also we have discussed. Teesta Dam and इसके क्या consequences हैं. Teesta River पे ये बन रहा है, which is in Sikkim, and how Teesta is the largest river which flows through Sikkim. And how this is in an ecologically sensitive zone and can result in disasters, natural disasters. So concerns related to environment safety, structural integrity, and public consultation, says Sikkim BJP chief. Okay, Army's Fort William in Kolkata to be known as Vijaydur. This is something which we were discussing. इसके अलावा और भी कुछ renamings कर रहे हैं लोग. Kitchener House inside Fort William has been renamed Manik Shaw House. Who was Manik Shaw? I think most of you would be knowing. अब तो मूवी भी आ गई विकी कौशल की. Who was Mr. Sam Manik Shaw? मिस्टर भी नहीं बोलना चाहिए, जनरल बोलना चाहिए. जनरल सैम मानिक शॉ, फील्ड मार्शल. He was a field marshal. And South Gate, formerly known as St. George's Gate, को अब नाम बदल के हो गया है शिवाजी गेट. So this is also some one-liner sort of updates. फोर्ट विलियम जो है किंग विलियम द थ्री ऑफ इंग्लैंड के नाम पे रखा गया था. 1781 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. जब हम फोर्ट विलियम की बात करते हैं तो एक और
ट्रेजेडी की भी हम बात करते हैं जो 1700s में हुई थी। किसी को पता है उस ट्रेजेडी का नाम, जहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश ब्रिटिशर्स को सफोकेट होके वो मर गए थे एक कमरे में। डज एनीवन नो द नेम ऑफ दैट ट्रेजेडी व्हिच हैपेंड इन कोलकाता, फोर्ट विलियम? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। ब्लैक होल ट्रेजेडी उसका नाम था। एनीवे, मूविंग अहेड, एम्स हैविंग फैकल्टी शॉर्टेज। ओके, Kia hit 155 million tax evasion charge. Volkswagen's $1.4 billion tax dispute. Okay. Comment on Indian forms taken out of context, says OpenAI CEO Sam Altman. Okay. What else do we have? Anything interesting? Trump's Gaza takeover plan rejected by allies and foes alike. Allies मतलब दोस्त, foes मतलब दुश्मन, दोस्त और दुश्मन किसी को भी नहीं पसंद आ रहा उनका टेक ओवर प्लान। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, चाइना, न्यूजीलैंड, जर्मनी, रशिया reiterate support for a two-state solution. Palestinian President Abbas calls for the UN to protect the territory's people and their rights. डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब मिले हैं इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जी से इन द व्हाइट हाउस। दिस वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे एज वेल। तो देखते हैं क्या होता है, ट्रंप भाई साहब अपनी मनमर्जी कर पाते हैं कि नहीं। हमास वांट्स गाजा टेक ओवर बाय यूएस कोड इग्नाइट रीजन। बेसिकली अनु मलिक की भाषा में बोले तो आग लगा दें, आग लगा दें। बट नहीं, नो किडिंग। उन्होंने धमकी दी है कि भाई गाजा पे टेक ओवर मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। ट्रंप टू साइन ऑर्डर बैरिंग ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट्स फ्रॉम कंपीटिंग इन स्पोर्ट्स। अब यहाँ यूएस में ये काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है जेंडर राइट्स वाला इशू। पिछले साल भी काफ़ी इस पे अप्रोर हुआ था व्हेन ट्रांसजेंडर पर्सन वन मल्टीपल इवेंट्स इन विमेन कंपटीशन। तो अब इन्होंने जो है बार करने का ऑर्डर साइन कर दिया है, मतलब करने वाले हैं, जिससे ट्रांसजेंडर विमेन वुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन विमेन विद विमेन एथलीट्स इन स्पोर्ट्स। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। कुछ ना कुछ तो ट्रम्प भाई साहब करते रहते हैं। ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी इज डूम टू फेल, सेज ईरान। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जी ने बोला है ये कि ऐसे दबाव की पॉलिसी तो फेल हो जाएगी। ओके, what else do we have? It's time to put ODI cricket in the limelight again. So आज से मतलब अभी मैच चल ही रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, 3 मैच ODI सीरीज। Okay, what else do we have? World number 1 Halep, former world number 1 Simona Halep retires from tennis. Okay. Nothing else which is important for us. So we'll do the 4 or 5 articles which we had identified earlier and discuss them in a little more detail. Let's go back to our presentation. Just a moment. Yeah. Okay. Priyanshi is saying can't trust exit polls. I agree. First 5-star general of India. Yeah, that's one way to say it. Field Marshal, first Field Marshal of India. Was he the first Field Marshal? If yes, then who was the second one? And if he was the second one, then who was the first one? Basically, I'm trying to ask you, who was the other Field Marshal apart from Sam Manik Shaw? Please let me know in the chat box. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हम लोग हेल्थ लीडरशिप की बात कर रहे हैं सबसे पहले। So health leadership में the article says it's a green signal for India to assert its health leadership. So जब हम बजट की बात कर रहे हैं इस बार वाले बजट की, तो we have talked about how we want to establish India as a center of global healthcare and secondly addressing global shortfall of healthcare professionals. तो इंडिया को हम
दूसरी कंट्रीज को हम डॉक्टर्स भी प्रोवाइड करें, ग्लोबल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करें। जिसमें काफ़ी सारे हमने एक्शंस की बात करी, जैसे हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया इनिशिएटिव्स की बात करी हमने रिसेंट बजट में। And we have also talked about how we are going to streamline visa processes, how we are going to improve hospital infrastructures, how we are going to forge different public private partnerships between hospitals, and thus promoting something which we call as medical tourism. You guys understand what is medical tourism? बाहर से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए. That is called medical tourism. So making India a preferred destination for international patients is what this article says we are targeting. And they're saying that we have done a good job up till now. And this budget also announces a 200 daycare cancer center in different districts, which would make cancer treatment much better and improve your early diagnosis, and it would result in better patient outcomes, better treatment of patients. कस्टम ड्यूटी की बात करी है इस आर्टिकल ने, जैसे हमने बीसीडी जो है विच इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, काफी सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स पे से हटा दिए. 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैव बीन exempted from your custom duties, including those of cancer and rare diseases and chronic diseases. एंड इससे जो है ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, दस काफ़ी सारे पेशेंट्स को बेनिफिट होगा अक्रॉस द कंट्री. एंड उसके अलावा मल्टीपल पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड फॉर क्रिटिकल केयर पेशेंट्स एंड क्रॉनिक केयर पेशेंट्स. So that is what the article mota moti talks about, that we are going in the right direction. देखो यहाँ पे it's talking about India's healthcare transformation, then custom duty exemption, tech outlook, and building on the momentum. Heal in India, heal by India, ये सारी चीजें यहाँ पे mention है. The budget has recognized the role of healthcare as a pillar of national growth. So that is what the simple article is about. Yeah, that's pretty much it. Then, when we talk about the monetary policy making, the rupees slide confounds monetary policy makers' task, makes it a little difficult, makes it a tough call. Why does it make it a tough call? Because monetary policy regulates how the currency flows in the country, how inflation flows in the country. And अभी जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि the draft monetary policy is under consideration, and rupee is constantly declining. In the past couple of months it has declined by 2 rupees. 85 था दिसंबर में, and then 86 था जनवरी में, अब 87 हो गया फरवरी में. But इसमें the factor is not just the strengthening of the dollar, as we were discussing. Trump making America great again is the symbol which he has given, and therefore he has imposed higher tariffs on major trading partners and trading countries, China, Mexico, and आपका Canada. जिस वजह से द डिमांड ऑफ डॉलर इज नाउ इंक्रीजिंग, एंड उस वजह से डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, एंड उस वजह से द रुपी इज वीकनिंग. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसके अलावा इसके और भी रीजंस है. मॉनेटरी पॉलिसी, द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इज वन ऑफ देम, which is controlled by the RBI as well as the central government. तो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका प्राइमरी एम होता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइस को कंट्रोल करना इंडिया में डिफरेंट कमोडिटीज की, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, कि ऐसा भी ना हो कि हमारी ग्रोथ स्लो हो जाए प्राइस कंट्रोल करने के चक्कर में. सो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है ना, 4+-2 वाला इन्फ्लेशन हमारा चलता रहे. एंड अगर हम एक्ट की बात करें तो ये आरबीआई एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश्ड है. हमारा टारगेट जो इन्फ्लेशन टारगेट 4+-2% वाला, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, which talks about ideal inflation target of 4+-2%. And this is what we plan to achieve using the policies of the monetary policy committee. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर कॉम्पोजिशन की बात करो तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इट हैज 6 मेंबर्स, 6 members in the monetary policy committee. एंड कौन कौन होते हैं मेंबर्स? चेयरपर्सन होते हैं इसके आरबीआई के गवर्नर. कौन है आरबीआई के गवर्नर? अभी हमने डिस्कस किया, शक्तिकांता दास को कौन रिप्लेस कर रहे हैं? जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, हु इज द न्यू आरबीआई गवर्नर. देन और इसमें मेंबर होते हैं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, who are in charge of the monetary policy committee. एक ऑफिशियल होते हैं आरबीआई के बोर्ड से, एंड 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. तो हो गए 6 लोग, 1 गवर्नर, 1 डेप्यूटी गवर्नर, 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है. सो अब ये जो मेंबर्स हैं इनका ऑफिस कितने पीरियड का होता है, टेन्योर क्या होता है इनका? ऑफिस होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. द मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी.
ठीक है जी। अब इसमें मेजॉरिटी वोट के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं, जिस डिसीजन को मेजॉरिटी मिल जाती है वो पास हो जाता है। अगर टाई हो जाता है तो आरबीआई गवर्नर का वोट इज द कास्टिंग वोट और द फाइनल वोट। एंड जो डिसीजंस होते हैं एमपीसी के वो बाइंडिंग होते हैं आरबीआई पे, कि अगर एमपीसी ने बोल दिया कि हमारा रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट इतना होगा, तो आरबीआई को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट हाउ योर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी impacts your currency value and how it takes different decisions on controlling your interest rate, controlling the price of commodities, while targeting steady economic growth as well. So यही लिखा हुआ है इस आर्टिकल में. That is what the article is about. Moving ahead, the rise of UPI digital payments. So UPI digital payments, as we were discussing, started from 1st April 2016 in order to promote P2P and P2M, which is peer-to-peer and peer-to-merchant transactions. Thus, making transactions which earlier used to happen either through NEFT or IMPS, जो कि काफ़ी एक तरीके से टीडीएस और कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था, तो अब काफ़ी ज़्यादा हमने स्मूथ कर दिया है विद यूपीआई. एवरीवन कैन नाउ जस्ट transfer money through their phones. So this article highlights how UPI has gained a lot of traction in the past few years. Digital payments की ये बात करता है कि 3.5 times बढ़ गई हैं 2013 से लेके 2024 के बीच में. 772 लाख करोड़ से लेके 2758 लाख करोड़ पे हम आ गए हैं. So that's a big monumental jump. एंड वॉल्यूम की अगर आप बात करो तो 222 करोड़ जो है वॉल्यूम हमारी बढ़ गई है, 20,787 करोड़ समथिंग समथिंग हो गई है. एंड इन द लास्ट 5 years डिजिटल पेमेंट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 1.6 टाइम्स एंड इन वैल्यू एंड 6.7 टाइम्स इन वॉल्यूम. सो ये आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर्स है. नंबर्स आपको याद नहीं करने, बट द जिस्ट ऑफ द मैटर इज कि यूपीआई पेमेंट्स की वैल्यू भी एंड उनके ट्रांजैक्शंस भी एंड उनकी वॉल्यूम भी सब कुछ इज ऑन द राइज. एंड इंडिया का जो पेमेंट लैंडस्केप है वो यूपीआई की वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, बिकॉज ऑफ एवरीवन गेटिंग इट ऑन देयर मोबाइल फोन्स. एंड अगर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की बात करो तो 34% लोग पहले डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए थे 2019 में. अब 83% लोग डिजिटल पेमेंट्स यूज करते हैं इन 2024. सो अगर आप यूपीआई की बात करो तो यूपीआई, एज वी वर डिस्कसिंग, इट्स अ पेमेंट सिस्टम विच वाज डेवलप्ड बाय whom? डेवलप्ड बाय योर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हु डेवलप्ड यूपीआई? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. सो इन्होंने एनपीसीआई डेवलप किया एंड 1 अप्रैल नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया. और 11 अप्रैल 2016 को इट वाज लॉन्च्ड एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ने डेवलप कर लिया, देन अपने लिए डेवलप कर लिया, फिर हमने इसको दूसरी कंट्रीज को भी प्रोवाइड किया. वी गेव इट टू मल्टीपल अदर कंट्रीज. सिंगापुर वाज वन, जापान वाज वन एंड सो ऑन. सो दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट. बेसिकली यूपीआई की तारीफ कर रहा है ये आर्टिकल. ओके. Let's move to the next one. Stryker infantry vehicle deal with the US progresses. Javelin to be redemonstrated. So ये हम more or less discuss कर ही चुके हैं. Stryker आपका ये जो आप infantry vehicle देख रहे हो, and Javelin is an anti-tank guided missile developed by US. Lockheed Martin करके जो कंपनी है उनकी, उन्होंने बनाया है with General Dynamics, another company based in US. तो आपका मीटिंग से पहले ये जो डील्स हैं, दिस बिकम इम्पॉर्टेंट एंड हाई एल्टीट्यूड के लिए यूज होंगे ये दोनों equipments, be it your javelin or be it your the striker vehicle. एंड इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इनका वेट है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यूएस के साथ मिलकर बना रहे हैं. एंड इट्स आईसीवी, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, डेवलप्ड बाय जनरल डायनेमिक्स एंड लॉकहीड मार्टिन, बोथ कंपनीज ऑफ द यूएस. ठीक है. तो हाँ, बस यही है इसके बारे में. जैवलिन, अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की हम बात करें तो दैट एंटर्ड इन द यूएस मिलिट्री इन 1990s, 96 टू बी स्पेसिफिक. इंडिया उससे वो टेक्नोलॉजी ले रहा है फॉर आर मिलिट्री एज वेल. सो इट्स बेसिक सिंपल वन लाइनर सॉर्ट ऑफ आर्टिकल. Let's move on to the next one and the last one for the day. Army's Fort William and Kolkata said to be known as Vijayadurg. So ये भी हमने more or less discuss कर ही लिया. ये भी one liner type का factual article ही है, इसमें analysis करने का कुछ नहीं है. नाम change हो गया है, मतलब हो जाएगा. फोर्ट विलियम इन कोलकाता का विजयदुर्ग, which
as I told you, was one of the naval base of the Marathas of Chhatrapati Shivaji, and one of the oldest fort in the western coast as well, Sindhudurg coast जो महाराष्ट्र में, उसका one of the oldest fort का भी नाम था विजयदुर्ग, which served as a naval base. So और बाकी नाम भी चेंज हो रहे हैं, जैसे किचनर हाउस is going to be named as Manekshaw House, and South Gate, which was also called the St. George Gate, would now be called Shivaji Gate. So ये तीन नाम चेंज है. सेंट जॉर्ज गेट से बन गया शिवाजी गेट, फोर्ट विलियम से बन गया है आपका विजयदुर्ग, एंड आपका हाउस वाला जो है किचनर हाउस से बन गया है मैनेक्शॉ हाउस. सो ये तीन नाम आपको बस याद रखने हैं. ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि 1756 में एक इंसिडेंट हुआ था वेयर ब्रिटिशर्स का ये फोर्ट विलियम कैप्चर कर लिया था वहाँ के नवाब ने. नवाब का नाम था नवाब सिराजुद्दौला, एंड उन्होंने कुछ ब्रिटिशर्स को ट्रैप कर दिया एक कमरे में रात भर के लिए. बहुत छोटा सा कमरा था, 60 ऑड ब्रिटिशर्स वर ट्रैप्ड देयर, 140 ऑड प्रिजनर्स वर ट्रैप्ड, एंड सुबह तक सिर्फ 20-25 ही बचे. सो दैट्स कॉल्ड द ब्लैक होल ट्रेजेडी. एंड जो ओरिजिनल फोर्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था 1696 में. ये ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में हुई थी. फिर फोर्ट विलियम 1780s में जाके बना था. सो दैट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है जी. That brings us to the analysis conclusion, and let's now look at our vocabulary for the day. The first word is fulmination. Fulmination का मतलब होता है an expression of vehement protest, विद्रोह, विरोध. Protest, objection, complaint. Antonyms are acclaim, applause, and condemnation. Sentences: players were told they had a right to be spared the foul-mouthed fulmination of the hockey coach. The next word is dissension. Dissension मतलब होता है disagreement that leads to discord. मतभेद जिससे हो जाए लड़ाई झगड़ा. Disagreement, dispute, dissent. Accord, agreement, concord are opposites. There are signs of dissension within the ruling political party. And the third word is vamoose, जिसको बोलते हैं जल्दी से निकल जाना कहीं से. Depart hurriedly. And synonyms are depart, exit, walk out. We'd better vamoose before we are caught. ठीक है. So vamoose मतलब जल्दी से भाग जाना. Depart hurriedly. Dissension means disagreement leading to a fight, and fulmination means an expression of protest. So these are the three new words for the day, and that brings us to the end of today's Hindu analysis session. Priyanshi is saying, can you write the company name? Sure, why not? General Dynamics. And Lockheed Martin. These are the companies. ठीक है. Okay, Kushagra is saying, but it's named Manekshaw House. हाँ यही तो बोला मैंने. Manekshaw House हो गया अपना. ठीक है. All right, Sanjay Malhotra was the right answer for the RBI governor. Absolutely correct. That brings us to the end of today's session. Thank you so much for participating. कल हमारा होने वाला है Minty quiz. So make sure you all turn up and use numbers. The quiz is on geography, and I am looking forward to host you all. Till then, take care, keep learning, keep preparing. Thank you so much. Bye-bye. Signing off.